little jarring to the eyes. Should we? Okay. Hi, Gaurav. I'm Tanmay from Peeping Moon. Hi. So my question is to you. Disney Plus Hotstar had an amazing year with The Trial, with The Night Manager, then Arya 3. So what is your vision for 2024? Thank you so much. Thank you for appreciating the stories. Yes, we have a very aggressive lineup of shows that we are very, very excited about, beginning, of course, with the Freelancer. So before we come to 24, let's end 23, hopefully with a big high and fans really liking what we have to share in the conclusion. After that, we have three shows that I do want to talk about, which are really exciting. First is we are bringing the third season of Legend of Hanuman in January, and that's India's first, large-scale animation designed for all audiences, not just for children. And it's Indian mythology told in a way of storytelling that hasn't been explored in a very big way in India before that, definitely on streaming, not done before. So that's very exciting. Then we are doing a very interesting story with Raveena Tandon in the lead, and it's exciting to partner with her for the first time for us, and that should be a good show. It's a twist on the kind of stories that Star has told for over 2 decades. Let me not tell you more. Wait to hear from us over the next few days, very, very shortly. Third, we are collaborating with Karan Johar on a fiction series called Showtime, which is set within the film industry, and it is Karan Johar telling a story about nepotism and what nepotism can do to a film studio. So that should hopefully be exciting as well. And then, of course, we have, Ram Madhvani and Neeraj Pandey coming back with other stuff, which we're not going to talk about today. But yes. Thank you. अनुपम सर से है। अनुपम सर आपसे है। सबसे पहले तो मैं तारीफ करना चाहूँगा द फ्रीलांसर्स पार्ट सेशन 1 की। उसके बाद पूरी उम्मीद है मुझे जो ये सीज़न 2 है वो भी माइंड ब्लोइंग आउटस्टैंडिंग होगा। पर मेरा ये सवाल है कि अगर आप 2023 की जितनी भी फिल्में देखें, जितनी भी सीरीज़ देखें, सब वायलेंस से भरपूर है, सब कुछ एक्शन से भरपूर है। पठान, जवान, टाइगर 3, इसके बाद एनिमल। क्या हमको ये नहीं लगता कि फिल्में कहीं ना कहीं समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज देने का प्लेटफॉर्म है? क्या हम इतना एक्शन, इतना थ्रिल जो दे रहे हैं, क्या वो ठीक है? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मेरे कॉन्ट्रैक्ट में हॉटस्टार में बोला था कि आप सिर्फ फ्रीलांसर के बारे में बात करना, और मैं चाहूँगा कि मैं उस क्लॉज को बरकरार रखूँ। हम यहाँ फ्रीलांसर की बात करने हैं, इतनी मेहनत की है लोगों ने, सब लोगों ने, और उस मेहनत पर हम कोई और बात करना शुरू कर दें तो फिर उस बात पे ज़्यादा चर्चा हो जाएगी। बेटर है कि हम इसको बरकरार रखें, इसकी मर्यादा को। ये सवाल मैं आपसे बाहर चल के कॉफ़ी पी के किसी दिन करूँगा। मैं आज के लिए हम फ्रीलांसर में मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने बहुत मेहनत की, और मेरा जो लुक है, मेरी वाइफ का फेवरेट इस साल का था शो। उन्होंने मेरी कभी 2023 में तारीफ़ ही नहीं की, मैंने काफ़ी काम किया। एंड उन्होंने मुझसे कहा कि नीरज का नंबर सेम है क्या? मैंने कहा हाँ सेम है, क्या हुआ? नहीं, उसका सेम नंबर नहीं है। मैं उसको मैसेज भेजा कि मुझे बहुत अच्छा लगा फ्रीलांसर, तो मैंने फिर उनको कहा कि आप फ़ोन करो। तो मेरे लिए तो ये 2023 बड़ा अच्छा गया एज़ फार एज किरण जी इज़ कंसर्न्ड। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अपने फ्रीलांसर मुझे कास्ट किया। सर थैंक यू सो मच, मेरा घर चल रहा है उस धन्यवाद। Thank you. Please Hello. raise your hands. Hello. Yes. Yeah. First of all, good afternoon, everyone. My question is to Neeraj sir. Recently, we've seen a lot of multiverse coming in terms of films, in terms of characters and plots as well. Can we see a multiverse in your web series as well, like Special Ops and Freelancer coming to a crossover for a multiverse? Nothing of that sort is going to happen. I mean, these are two totally different franchises, and now that it has become a trend, we are bored of it. I am not interested. If it would not have been a trend, we would have
possibly given it a chase, the idea. But since everybody is doing it, it's not for us anymore. Thank you. Thank you. You, please. Hi Mohit, Naveen this side. It's so good to see you like covering on location of Mahadev and right now asking you a question over here. It's so good to see you. We both have come so far to यहाँ पे. मुझे फ्रीलांसर बहुत पसंद आया. I want to ask you a question. अविनाश कामत के किरदार को प्ले करने के वक्त या उसके बाद क्या उस किरदार ने आपको अफेक्ट किया था कुछ किसी वे में? बिकॉज हमने आपको देखा, आपने जब मुंबई डायरीज किया, आपने बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर के किरदार को प्ले किया था, बट दिस कैरेक्टर लाइक मुझे उस किरदार से भी ज़्यादा बेहतरीन लगा. तो क्या इस किरदार ने आपको अफेक्ट किया था? थैंक यू, बट आई डोंट थिंक कि मुझे इस किरदार ने अफेक्ट किया था. लर्निंग्स थी इस किरदार की. एज एन एक्टर आप जब भी किसी किरदार को अप्रोच करते हैं तो आपका काम होता है सिर्फ अपने डायरेक्टर का विजन फॉलो करना. तो मैं नीरज सर का और भव का दोनों का विजन फॉलो कर रहा था. जो जिस तरीके का इन्होंने कैरेक्टर स्केच अपने माइंड में सोचा हुआ था, ऑन अ डेली बेसिस वी वुड एक्सप्लोर दैट. जैसे जैसे सीन्स आते थे, जैसे जैसे अप्रोच होता था, एवरी अप्रोच वुड बी डिफरेंट. जैसे कि आज हमने देखा जो वो शॉट था जो अनुपम जी के सामने मैं गन लेके खड़ा हूँ, तो उसका अप्रोच बहुत अलग था. वो नीरज सर को स्पेशली वैसी ब्लडी रेड आइज़ चाहिए थी, तो वो उस तरीके का अप्रोच था. सो आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ बैगेज उसके साथ कैरी किया या वैसा रहा, बट आई एन्जॉयड द जर्नी. द जर्नी हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल जर्नीज ऑफ माई लाइफ. द रीज़न बिग, मैंने कभी भी ऐसा एक अंडरडॉग प्ले नहीं किया है हु कम्स आउट of nowhere and becomes something else and has a second life in place, you know. So it was a very interesting arc for me to play and be Avinash Kamath. Thank you for your question. Please raise your hand so we know. Hi. Hello, Right Bhav. here. Yeah. I'm Sejal from To the Dainik right. Bhaskar. The question is for? Yeah, Bhav. What made hi. What made you believe that the Mohit and Kashmira's character is fit for them? Mohit's character, if you've seen how Avinash Kamath is, he's someone who's, जो first part में हमने उनकी journey देखी, he was someone in Mumbai, very rooted, and who was as rooted as possibly you can be, and then he was operating in Europe as well. Someone who has a lot of range. एक जगह हम देखते हैं कि वो बॉम्बे के एक ASI हैं, और दूसरी तरह हम लोग देखते हैं कि वो यूरोप में टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज और मर्सनरीज के साथ इंटरेक्ट करते हैं. सो यू नीड समवन विद अ लॉट ऑफ रेंज, एंड दैट्स व्हाई मोहित फिट द बिल परफेक्टली. वी हैव सीन अ ग्लिम्स ऑफ हिम before doing some action. Here the opportunity was much bigger. Kashmira gave a fantastic audition. She was, we needed someone, again, someone very innocent and someone who has a transformational journey with Alia. It was a very, very extensive process with Alia's character. We had a number of auditions, and Kashmira was fantastic in it. Hi, this is Vandana from Film India. My question is to Kashmira. Sorry, I have a bad throat today. Same here. High five. How did you find it? What was the challenging part of your role, and how did you prepare for it? Any challenges that you faced during this whole journey? So I would like to specifically mention the scenes that I've gotten the most reviews for. All the people that watched the first few episodes called me and were saying, why are you talking for more than 3 minutes in the bathroom scene? And they were like, we know you, when we watch it, we're so gripped, don't talk more, it's done. 3 people used to look at their watches and be like, okay, it's done, 3 minutes are done. But that takes me back to the time we were shooting it, and it was the same day that we shot all the bathroom scenes. And those scenes for me were quite challenging, because it's something really extreme that Alia goes through, or the information she gets about losing her father, about the betrayal that she is facing, about being trapped. So yeah, that one day, or the bathroom scenes especially for me, were very challenging. Thank you. Can you have the mic, please? Hello. Here. Okay. Sorry. Anupam Yes. sir, I'm Amar from Movified. Right at the back.
In The Freelancer, your character manages to leave a lasting impact with the audience. Can we expect to see more of Dr. Khan in Freelancer, the conclusion? Can you tell more about your role, please? मैं तो हर फ्रेम में होना चाहता हूँ मगर हमको कहानी भी सुनानी है बट आई मस्ट से दैट जब मैं शूटिंग कर रहा था तो मुझे लगता था क्योंकि मेरा कैरेक्टर इस तरह का था जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा था तो मुझे लगा था ठीक है ठीक ही होगा कोई खास बट आई थिंक द रिस्पॉन्स दैट आई हैव गॉट इज फिनोमिनल and yes I think the conclusion of freelancer will have some moments where you will see जो अभी सीन आपने देखा जैसे उसमें एक एस्पेक्ट उसका नज़र आता है काफ़ी कुछ है आई थिंक और वो धीरे धीरे होगा आपके कॉन्ट्रैक्ट में डेफिनेटली है कि आप कंक्लूजन बता नहीं सकते हो नहीं बताया सर ये देखिए इन्होंने सिर्फ इनको मुझे ही चुना है मेरे को रोकने को बोलने के लिए नहीं बिल्कुल नहीं बट यू विल हैव सेटिस्फैक्ट्री बट ऑल्सो थोड़ा सा वो मेरी माँ कहती है कि पेट भर के नहीं काम करना चाहिए थोड़ा रह जाना चाहिए तो अगले सीरीज़ में ये कुछ अब मुझे चुनेंगे जिसमें हर जगह मैं नज़र आऊँगा आपको मतलब इधर भी उधर भी और एक्टिंग करता हुआ ये मेरा इनको ऑडिशन था ये फ्रीलांसर कि इसमें देखो मैंने कितना अच्छा काम किया है और अगले उसमें ले लेना मुझे मैं स्ट्रगल करता रहता हूँ इनके साथ बहुत स्ट्रगल करता हूँ मैं इनके साथ जो मुझे पसंद है डायरेक्टर या जो लोग मुझे पसंद हैं और मैं उन हफ्ते में एक बार उनके ऑफिस जाता हूँ आप उनसे पूछ लीजिए और काम मांगने जाता हूँ खाना खाने की एक्टिंग करता हूँ पर एक्चुअली काम मांगने जाता हूँ बोलना चाह रहे हैं कुछ अब नीरज जी इसके बारे में पब्लिकली हैं सच है ना क्या सच नहीं है सच है देख और मैं काम नहीं मांगता हूँ आपसे नहीं जरूरत नहीं पड़ती है वो बात अलग है मगर मैं मांगने जाता हूँ अच्छी बात मुझे अच्छे लगते हैं दे आर वंडरफुल पीपल दे आर अमेजिंग पीपल दे लाइक ए बैड हैबिट अच्छी आदत फिर भी छूट सकती है बुरी आदत नहीं छूटती है बट थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन मेरे मन की भड़ास निकालने को मुझे मौका दिया आपने मज़ा आएगा आपको पार्ट 2 में भी आपको कंक्लूजन बहुत मज़ा आएगा इट्स वेरी थ्रिलिंग इट्स वंडरफुल इट्स अमेजिंग इट्स इन्होंने कितना अच्छा काम किया मैं जब शूटिंग कर रहा कि इनके साथ यू सी एप्रिसिएशन तब होती है जब आप काम करते करते मन में दाद देते हो कि वाह जो हमने जो सीन किया I noticed at that time only, even the earlier answer was a little funny, but when you did that shot where you were holding the gun for me, it was wonderful. And I really appreciated him. And I'm very happy that and my mother is your greatest fan, so you know that. Thank you. Thank you for your question. Hello. Hello, Shilpa here from Mayapuri magazine. My question is for Sheetal Bhatia ji. The Freelancer series is that displays massive scale. काफी different countries में shoot हुआ है. So what was the thought when curating this series? The thought was that to make it as big as possible. The story had a lot of challenges in it, and we like to take challenges, and that's the reason we just thought of it. I mean, we wanted to make it as big as possible. पहले एक प्लेन था नीरज को फिर बाद में 4 चाहिए थे तो I mean, yeah, that was the fun of it. Okay, my next question is to Anupam ji. अनुपम सर जी जिस तरह से एपिसोड्स जो जितने आए 4 काफ़ी ऑडियंस को बांधे रखा और अगली कहानी और भी इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से आलिया को बचाना है जो पूरा मिशन है तो किस तरह से आगे वाले एपिसोड्स जो है और ऑडियंस को बांधे रखने वाले हैं कुछ स्पेशल थिंग आगे वाले एपिसोड्स की इफ़ यू वांट टू शेयर अकॉर्डिंग टू यू आई थिंक नीरज की राइटिंग में सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो लिखा होता है वैसा वही नज़र आता है there is no editing done after that इसको निकाल देते हैं that I think the minimalistic approach that he uses और आपने भी सवाल पूछा शीतल जी से how do you decide that you are different from other people आपने बहुत अच्छा इनके बारे में बोला today's time there are so many people so many things so how do you become a leader or how do you become a different person is by working very hard. And that's what you will see in Freelancer. And on a side note, I want to tell you, the first person who did my interview in Mumbai before I got into movies
was Z.A. Johar from Mayapuri. And I'm thankful. I always had, मैं कुछ नहीं था और मुझे वो पृथ्वी थिएटर में मिले थे वाली पीटर जॉन और Z.A. जौहर साहब और उन्होंने मेरा मायापुरी में इंटरव्यू किया था. So I certainly remember that you are from Mayapuri. Yes. Thank you. We have time for one last question. हाय, दिस इज हर्षिदा हियर फ्रॉम स्क्रीन ग्राफिया. नीरज जी, आपसे पूछना था, आपका ये जो फिक्सेशन है, मतलब एजी, सस्पेंस, थ्रिलर, मतलब क्या है कि उधर ही आप हुक हो जाते हैं और हमें भी हुक कर देते हैं? Fixation is a very strong word. It is actually it's a great story that draws you, and in this case, I was happy that Bhav was excited by the idea of leading this one and putting this ensemble cast and help us in shaping up this particular story. But it's always the story. It starts with the story and ends with the story. If the story is worth sharing with audiences and you've got faith in your audiences that the audiences will enjoy that ride, I mean, that's the biggest motivation. Thank you for your question. Thank you so much. But that's all the time we have. One more? Yeah, whatever. As you say. Please. Good afternoon. My name is Vijay Lakshmi. My question is for Gaurav, sir. Hi, yeah. Hi, sir. My question is, the Freelancer has a very global theme at the center stage. You know, it's about espionage and a whole lot of other global issues. And I think that's what translated to its success, at least with the first edition. Why, in your opinion, has it translated to that kind of success? And secondly, why do you think is there so much anticipation for the second part? Yes, I agree with you. I think I said earlier that there is an increasing feeling today that we are all living in a very dangerous world. There are wars erupting in every continent now, and the threat of terrorism, threat of somebody coming in from outside and taking away everything that we treasure, right? And I think all our homes, there is deep hope always that you'll come back to your loved ones wherever you are out through the day. You want to return and have that one meal together. You want to be with your family. Those are the things that people genuinely live for. And in some way, all these dangers and this sense of a temperature and the heat rising, right, with intolerance, with the threat of war, all those things are things that everywhere in the world people are worried about. They're concerned about it. And they're certainly concerned about it in our country. And we can see that with the response that this show and the first part of it has taken. And because the first part has worked really well, and anything that we have shared about the second part, including the scene that you all saw, I could sense that the reception was really positive, which is what gives all of us here hope that the second part will also be well received. We don't know, but as always, we live on hope, and we believe that the audience in India is looking for discerning, well-told stories. And I think if people have the heart in the right place, and I think everyone here has certainly done that and devoted so much of their time, given so much of their passion to make something well, hopefully the results will also be meaningfully good. Thank you so much. Thank you. And in spite of all the global developments, you managed to keep us glued, connected with content that grips us. So thank you so much. And with that, thank you to the entire cast, the makers. Thank you so much. And thank you to all our friends from the media. It's time, of course, for a nice photo op. Ek entire Freelancer ki family ki photo op. So for the same, may I request to please step forward. Yeah, we'll move the tables. Can we request to please move the tables and step, if you could step forward? Thank you.